Hello guys, I'm going to record a lecture on the topic Look Back in Anger, a drama by modern author John Osborne. Look Back in Anger, written or staged in 1956, a play written by modern playwright John Osborne. Osborne wrote it in 17 days while on vacation. When he was on vacation, he completed it or he wrote it in 17 days. It was premiered at London in Royal Court Theatre in 1956. That it was staged first in 1956 in Royal Court Theatre. The play is written in three acts. There are total three acts. Osborne took the inspiration from his personal life. He wrote this play based on his personal life in biographical aspect and failing his marriage with Pamela Lane. Osborne married five times, ending his happily life married to the art critic Helen Dawson. Means he married for five times, but he was happy with Helen Dawson. After the now I want to include some historical aspects. After the second world war, which ended in 1945, the Britain faces the task to rebuild their infrastructure. There was very difficulty for the Britain after the second world war. As a result of these difficulties, Britain withdrew from their colonies in India, Sri Lanka and Myanmar in 1947, and also there were some freedom of other countries as Britain, Sri Lanka, and Myanmar in 1947. So there was also a huge unemployment for the Britishers. The 1956 Suez Crisis, in which Britain invaded Egypt and eventually withdrew due to the political and economic pressure, led to the humiliating recognition, and the country was no longer a world power. Now, this was the time after the 1947. There in 1956 there was a Suez crisis, the Suez Canal crisis, and also Britain was facing some difficulties regarding their economic. Further changing the social context in the country, in 1944, Mass Education Act in Britain had made secondary education free, opening up the possibility of higher education to the working class. Means there was a lot of changes at that time when it was written or the play was written. So these some aspect were historical aspect, biographical aspect, which influenced the drama, and also there is the reason behind the anger in the play. The play is based on a term, angry young man. पूरा play किस पे बेस है थीम पे angry young man, and it is also known as the kitchen sink drama. It is known as the kitchen sink drama because this play taken or performed just in a flat in very small room in a small area. That's why it is considered a kitchen sink drama. There was a group of writers in 1950. There were a group of writers who wrote plays and novels in anger myth. Myth means when the main character is feeling irritating, as well as he is disturbed by the external society. As John Osborne, Kingsley Amis, and John Brain, Alan Sillitoe, and John Vane, these authors wrote novels and drama which were mainly based or which are based on anger myth or kitchen sink. Kingsley Amis is well known book or Kingsley Amis is well known for his book Lucky Jim. Characters in the play Major and Minor. Jimmy Potter, the protagonist of the play, and he stands for the angry young man. Alison Porter, the wife of Jimmy Potter and belong from an upper class. Cliff Lewis, the friend of Jimmy and Alison. Hella Charles, Alison's upper class friend and mistress of Jimmy. Actually, this was not mentioned in beginning. Hella and Jimmy are contradictory. Mainly, Jimmy does not like Hella, but when Alison goes to her house, there was an affair between Hella and Jimmy. Colonel Redfern, father of a legion and a former colonel in British Army. Hugh Channer, he is a friend of Jimmy.
मिसेस टैनर द मदर ऑफ हग टैनर कॉल्ड हग मम्स बाय जिमी। जिमी उनको हग मम्स बोलता है, जो मदर हैं हग टैनर की मिसेस टैनर। शी हेल्प्स जिमी इन सेट अप अ स्वीट हॉल, और जब वो एक मिठाई की दुकान लगाता है उसमें वो हेल्प करती है। माइनर कैरेक्टर्स इन द प्ले, Webster. He is the only friend of Alison. Alison का फ्रेंड है. He plays banjo and able to talk in Jimmy's dialect. जैसे जिमी बात करता है वैसे ही Webster बात कर सकता है. Jimmy believes that Webster is a gay. Madeline, the first love of Jimmy. She is 10 years older than Jimmy. Jimmy thinks her as an example of the enthusiasm that Alison lacks. वो मानता है कि जो मैडलिन है वो ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, ज़्यादा उत्साहित है, और जो कि एलिसन है जिसकी वाइफ है उसमें उत्साह की कमी है। निजिल द ब्रदर ऑफ एलिसन, जो एलिसन का भाई है, जिमी कॉल्ड हिम जस्ट अबाउट एज वैग एज कैन गेट विदाउट एक्चुअली बीइंग इंडिविजुअल। ही डोंट लाइक मेनली निजिल और द होल फैमिली ऑफ एलिसन। एलिसन्स मदर शी स्ट्रांगली डिसएग्री विद द मैरिज ऑफ जिमी एंड एलिसन, और जो उसकी मदर है एलिसन की वो कभी भी नहीं चाहती दैट दिस मैरिज शुड कंप्लीट, जिमी और एलिसन की शादी हो। But it was helped or agreed by her father, Miss Drury, the landlord of Jimmy, जहाँ ये लोग रहते हैं जिस फ्लैट पे उसकी मालकिन। Act first, guys. This play is divided in three acts. So this is the first act. In this lecture, mainly I will cover the characters, major or minors, some aspects about the play, and the act first. In second lecture, I will cover the act second and act third. The play opens on a chilly evening in the month of April in a one-room flat. प्ले कहाँ ओपन होता है? एक ठंडी सी इवनिंग, मतलब ठंड का मौसम है, अप्रैल का मंथ है, और एक फ्लैट है शाम, उसमें ओपन होता है जबकि शाम का टाइम हो रहा है। इन अ लार्ज मिडलैंड टाउन, इंग्लैंड के टाउन में। इन दिस फ्लैट अलीसन, जिमी एंड क्लिफ लिव। तीन लोग रह रहे हैं, अलीसन, जिमी एंड क्लिफ। When the play opens, जब प्ले ओपन होता है, जिमी एंड क्लिफ आर सीटेड इन चेयर्स, दोनों बैठे हुए हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर, while Alison is busy in ironing. Alison जो प्रेस कर रही कपड़ों पे। All the three characters are almost the same age, और तीनों जो कैरेक्टर्स हैं लगभग एक ही एज के हैं। जिमी इज गेटिंग इरिटेटेड आफ्टर रीडिंग संडे न्यूज़पेपर। जिमी हर समय चिड़चिड़ा सा रहता है। ही इज गेटिंग इरिटेटेड जब वो संडे का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। जिमी इज फ्यूरियस ऑल द टाइम फॉर अलिसन्स, उसे गुस्सा आता रहता है अपनी वाइफ पे, एंड हर फैमिली एंड ऑल्सो ही इंक्लूडेड अलिसन्स फैमिली, मतलब अपनी वाइफ पे गुस्सा करता है, साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली पे। एंड क्लिफ वांट्स टू स्टॉप हिम, जब क्लिफ जिमी को स्टॉप करना चाहता है, रोकना चाहता है, मना करता है उसे इस चीज के लिए। जिमी स्नैचेस द न्यूज़पेपर फ्रॉम क्लिफ, तो वो अखबार छीन लेता है क्लिफ से। जिमी इज गेटिंग हंग्री एंड क्लिफ कॉल्ड हिम फूड मैनियक, मींस ही इज टोटली डिस्टर्ब्ड, ही इज फीलिंग लाइक अ ग्लूटन, मींस जो बहुत ज्यादा खाओ हुआ, पेटू। फॉर जिमी देयर आर टू पॉश न्यूज़पेपर्स ऑन संडे, मतलब जो पैसे वाले लोग पढ़ते हैं ऐसे न्यूज़पेपर पॉश। क्लिफ सेज ही इज रीडिंग a statement made by Bishop of Bromley, कि वो एक कोट को पढ़ता है जो ब्रोमले ने बोला, that all Christian should assist in manufacturing the hydrogen bomb, कि सभी ईसाइयों को हाइड्रोजन बम बनाने चाहिए। Alison continues her ironing and Jimmy is impatient with her and daily boring routine, और जो Alison है, the wife of Jimmy, who is totally busy in ironing the clothes while Jimmy was reading newspaper and also getting bored. Jimmy learns that Alison's friend Webster is coming home at evening, and so he says he will tolerate him that he don't want to he should come. Jimmy नहीं चाहता कि उसका दोस्त वेबस्टर घर पे आए। Then Alison ironically says he will good with Madeline. वो उस पर सटायर करती है, मतलब आर्निकली बोलती है कि उसे वेबस्टर के साथ तो बुरा लगता है जिमी को, क्योंकि वेबस्टर जो है उसका फ्रेंड है एलिसन का, जबकि जो मैडलिन है वो उसके बचपन की दोस्त है। जब वो 18 साल का था जिमी, तो उसकी दोस्ती मैडलिन जिससे 10 साल बड़ी है। दी मिस्ट्रेस ऑफ जिमी व्हेन ही वाज 18 ईयर ओल्ड एंड शी वाज 10 ईयर देन हिम, वो उससे 10 साल बड़ी थी। क्लिफ अर्ज जिमी नॉट टू टॉक इन सच अ मैनर टू एलिसन, जब जिमी बार बार उसको टॉर्चर करता है, बार बार उसको कमेंट करता है उस पर, तो क्लिफ मना करता है जिमी को, उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। क्लिफ अर्ज नॉट टू टॉक इन सच मैनर टू एलिसन, देन जिमी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग निजिल द ब्रदर ऑफ एलिसन, whom he described as the straight backed chinless wanderer from Sandhurst, कि जैसे कोई Sandhurst where he was learning, you know,
this was an army college in London. Jimmy was challenged by Nigel when he said that Nigel's mother evil mind. जब एक बार उनकी शादी तय होती है, जब वो घर पे जाता है, तो जिमी और जो निजल ब्रदर है उसका, अलीशन का, उनका झगड़ा होता है और वो उसको, जिमी को चैलेंज करता है लड़ने के लिए, क्योंकि जो जिमी है उसकी मदर को इविल माइंडेड बोलता है। अलीसन लिसन ऑल द बाइटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ जिमी, और अलीसन जो उसकी वाइफ है सब कुछ सुनती रहती है जितना भी जिमी कहता है या उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ही डिस्क्राइब निजल एंड अलीसन एज साइकोफेंट, फ्लेगमेटिक एंड पोस्लैनियस, कम दिमाग के लोग, बेकार लोग, निगेटिविटी से भरे लोग, सन की लोग, ऐसी बहुत सारी बातें बोलता है जो जिमी है वो अलीसन को और उसकी फैमिली को। फर्दर ही कॉल्स अलीशन अ मॉन्यूमेंट टू नॉन अटैचमेंट, एक ऐसी चीज जो अपनी तरफ आकर्षित ना करते, मीन्स जस्ट डल बोरिंग एंड हिमसेल्फ सक्सेस। जिमी टेल्स क्लिफ द मीनिंग ऑफ पुसलैनियस, जब क्लिफ बार बार उससे पूछता है व्हाट यू हैव सेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुसलैनियस, दैट यू आर रिमार्किंग अलीसन वांटिंग ऑफ फर्मनेस ऑफ माइंड ऑफ स्मॉल करेज, जिसमें थोड़ा सा ही साहस हो, हैविंग अ लिटिल माइंड, थोड़ा सा ही दिमाग हो, मीन स्पिरिटेड, कोआर्ड, टिमिड ऑफ माइंड, डरपोक जैसे, एंड अगेन कॉल्स हर लेडी पुसलेनियस, ऐसे महिला को पुसलैनियस बोलते हैं। ये जिमी जो है अलेशन के लिए बोलता है। जिमी फील्स अपसेट, जिमी फील्स अपसेट बाय द साउंड ऑफ चर्च बेल्स, उसे चर्च की जो साउंड है उसे उसे बहुत दिक्कत है। ही इज फीलिंग असैम्ड एग्जॉटेड नाउ द ब्लडी बेल्स हैव स्टार्टेड, वो कमेंट करते थे वो कितनी गंदी जो घंटियां हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। अलिसन टेल्स क्लिफ, Alison tells Cliff about her pregnancy and Cliff suggests her to inform her husband. जब Alison Cliff को बताती that she is pregnant, तो वो कहता वो अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करे या उसको बताए। Cliff kissed Alison many times and there was also some kind of little affair between the Alison and Cliff. Jimmy remembers his time with Hug Tanner and also Jimmy was very fond with Hug Tanner, his friend's mother, जो हग टैनर की मदर थी मिसेस टैनर, उनके साथ जो अलीशन सॉरी जो जिमी है वो अच्छा फील करता है। When Cliff goes out, Jimmy loves Alison, और जब जिमी क्लिफ बाहर जाता है तो जिमी कोशिश करता है कि वो अपनी वाइफ को प्यार करे। He calls her as a very beautiful great-eyed squirrel, बहुत ही सुंदर गिलहरी, and Alison describes Jimmy as a jolly super bear, a really marvelous bear, बहुत ही सुंदर भालू। So guys, this is the scene also in uh, name of symbolism, means the play of bear and a squirrel, और इस पे क्वेश्चन भी होता है कि इसका सिंबोलिज्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है। Cliff inform about the telephone call from Helena. Now also we can learn from there that Jimmy is a very upset man. कभी वो इतनी बुराई करता है, कभी उसको उल्टा सीधा बोलता है। Sometimes he criticized very much not only Alison but also her family. And again suddenly he calls her a very beautiful great-eyed squirrel, and also she calls him a jolly super bear. So this is very what we can say sentimental. क्लिफ इन्फॉर्म अबाउट टेलीफोन कॉल, क्लिफ को एक कॉल आती है जिसको इन्फॉर्म करता था हेलना चार्ल्स अ फ्रेंड ऑफ अलीसन एंड जिमीज नेचुरल एनिमी, मतलब अलीशन की जो फ्रेंड है हेलना चार्ल्स, उसको जिमी जो है वो अपना नेचुरल एनिमी मानता है। जिमी ने द पैशन ऑफ अलीसन लाइक द पाइथन, और जिमी फिर से क्रिटिसाइज करता है अलीशन को जैसे कि वो एक पाइथन की तरह हो, सेक्सुअली रिमार्क्स। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर. In second lecture I will cover Act 2 and Act 3. Thank you so much guys. If you like the video, share, comment and subscribe the channel. Thank you.